Okay. Uh, so our today's topic is about ex situ bioremediation techniques, as we have discussed previously about in situ bioremediation techniques. So if we talk about ex situ bioremediation techniques, so these are the techniques which can be applied to bioremediate the contaminated soil or water. And here we will discuss about the ex situ bioremediation technique of soil. Okay. If we talk about its advantages, so this technique is very faster as compared to in situ bioremediation technique. It is easier to control, right? Uh, वहाँ पे हम उस साइड पे नहीं कर रहे, इस वजह से इस टेक्निक को कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है. If there is a wide range of contaminants and wide range of soil types, then this technique can be used. So here are some of the advantages. In addition to these advantages, uh, there are some disadvantages of ex situ bioremediation techniques, and they include, like, you have to dig up the soil which you want to decontaminate, and in some cases, you have to do the pre-treatment of the soil, right? ex situ bioremediation टेक्निक में कुछ ऐसी डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं, लाइक ऑब्वियसली जिस साइट के ऊपर वो सॉइल प्रेजेंट है, पहले आप वहां से उसको उठाओगे, देन आप किसी भी जो है फॉर एग्जांपल लैब के अंदर लेके जा रहे हैं वहां पे उसकी बायोरेमिडिएशन करवा रहे हैं. देन सेकेंड वन इज कि कुछ सॉइल की जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उन सॉइल की हमें प्री ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, ठीक है. So, ex situ bioremediation, these are some of the advantages and disadvantages of ex situ bioremediation. Then, if we talk about the types of ex situ bioremediation, so mostly there are two types. Yeah, there are two techniques of ex situ bioremediation. एक को हम slurry phase bioremediation कह सकते हैं, and next one is solid phase bioremediation. ठीक है, ये दो टेक्निक्स हैं जो हम ex situ bioremediation के लिए यूज करते हैं. So, first we'll talk about the slurry phase bioremediation. So what happens is the contaminated soil which we have excavated from that site, we just take that contaminated soil and then we combine that contaminated soil with water, right? And उसके बाद हम क्या करते हैं, we add some other additives. कुछ और हम इसके अंदर additives डाल देंगे और उसको हम एक बड़े से टैंक के अंदर बेसिकली डाल देंगे, that is known as bioreactor. ठीक है. और फिर ऑब्वियसली बायोरिएक्टर के अंदर जो भी फॉर एग्जांपल उस कंटामिनेटेड सॉइल के अंदर ऑलरेडी माइक्रोब्स फॉर एग्जांपल प्रेजेंट थे, so we just mix those microbes with the contaminated soil and water and all other additives which we have added in the large tank, right? मिक्स करने का पर्पस ये होता है कि माइक्रोब्स उसके साथ मिक्स उस सॉइल के साथ मिक्स अप हो जाता है. तो वी आर बेसिकली मेकिंग अ काइंड ऑफ स्लरी, ठीक है. कि हम वाटर वो जो सॉइल है उसको हमने एक बड़ा सा कंटेनर दैट इज नोन एज टैंक, लार्ज टैंक दैट इज नोन एज बायोरिएक्टर, उसके अंदर हम कंटामिनेटेड सॉइल डालते हैं, देन वी ऐड द वाटर एंड सम अदर एडिटिव इन दैट लार्ज टैंक, and then what we do is we just mix that soil so that microbes can be evenly distributed, and they come in contact with the contaminants that are present in the soil,
which we want to decontaminate, right? As you know, obviously we will provide those microbes with nutrients like nitrogen, phosphorus, and carbon, and then oxygen is added in the bioreactor, and obviously uh, there is a need of like proper optimum temperature and optimum pH for those microbes to perform the process of bioremediation or to degrade the contaminant. And upon completion, like if treatment is then completed, like we have or the microbes have basically degraded the contaminants, then the water which we have added in the start, was water. So basically we will remove that water from the soil, and that water is obviously going to be disposed of, and obviously this process is then completed, right? समझ आ गई ये वाला process? Next है, अब इस अगर स्लरी फेज वायलिएशन की प्रोसेस की हम बात करें तो दिस प्रोसेस is very rapid process as compared to some other biological treatment processes, right? Um, and secondly, the success of this process is highly dependent on the specific soil and the chemical properties of contaminated material, right? Like एक soil किस type की है जिसको हम decontaminate करवाना चाह रहे हैं, and secondly जो contaminants हम degrade करवा रहे हैं वो किस type के, उनकी क्या properties हैं, right? आइदर वो केमिकल्स ऐसे हैं कि वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, या दे टेक सम टाइम, राइट? And these are basically some of the advantages of this slurry phase bioremediation. And it also has some disadvantages, right? जैसा मैंने पहले स्टार्ट में थोड़ी सी बात की है कि बाजू का स्लरी फेज बायोरेमिडिएशन ये होता है कि इट रिक्वायर्स प्री ट्रीटमेंट, राइट? एक तो ये कि कुछ सॉइल ऐसी होती हैं लाइक दे कंटेन द हाई अमाउंट ऑफ कंटामिनेंट्स, लाइक हमने जैसे इन सिटू बारे जब हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कंटामिनेंट्स की अगर कंसेंट्रेशन 5% से ज़्यादा हो जाती है तो वो हाईली कंटामिनेटेड सॉइल होती है, राइट? In that case, if the soil is highly contaminated, तो it requires pre-treatment, right? जैसे हमने वहाँ पे देखा था, हम उसके अंदर कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाल रहे थे और उसकी मदद से बेसिकली डूइंग द pre-treatment of the soil. Likewise, slurry phase bioremediation में भी soil के अगर it contains a high amount of contaminants, तो there is a need कि हम बेसिकली उसकी प्री ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है? फिर कुछ केसेस में लाइक सॉइल वॉशिंग वगैरह भी की जाती है, या देयर इज अ काइंड ऑफ लाइक फिजिकल एक्सट्रैक्शन or vacuum extraction that we will perform before going for the slurry phase bioremediation, ठीक है? So, in addition to some advantages, there are some disadvantages जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, ठीक है? So, this is all about slurry phase bioremediation, ठीक है? Next is solid phase bioremediation. That is the, the second type of ex situ bioremediation. Um, so, basically, this solid phase bioremediation, it is a process that treats the soil in above ground treatment areas, and obviously they are equipped with collection system to prevent any contaminant from escaping the treatment. ठीक है, इस केस में above ground, like आप
सॉलिड फेज बायोरेमिडिएशन करवाते हैं, ट्रीट सॉइल को ट्रीट करते हैं। एंड ऑब्वियसली कुछ कलेक्शन सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, सो दैट जो भी सॉइल डिकंटामिनेट होगी इट डजंट गेट मिक्स विद द कंटामिनेटेड सॉइल, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें भी आप क्या करते हो कि यू जस्ट प्रोवाइड द मॉइस्चर, you provide the proper temperature, uh, treatment, nutrients like nitrogen, phosphorus, and carbon and oxygen to the microbes, right? Um, अब अगर हम सॉलिड फेज बायोरेमिडिएशन प्रोसेस की बात करें तो दे आर रिलेटिवली वेरी सिंपल टू ऑपरेट एज कंपेयर टू स्लरी फेज बायोरेमिडिएशन। एंड ऑब्वियसली जैसे पहले बात की, इनके साथ प्रोडक्शन सिस्टम्स भी कनेक्टेड होते हैं, तो they require obviously large space, and they are not a rapid process, and they require more time to complete, they are slow as compared to slurry phase bioremediation, right? अब अगर हम इस की बात करें सॉलिड फेज बायोरेमिडिएशन, तो इट इंक्लूड्स थ्री types, that is three processes basically. That is the land forming. First one land forming, second one is soil biopiles, and third one is compositing. Right. So land forming की अगर हम बात करें तो this process is relatively simple treatment method. Right. Obviously, सबसे पहले contaminated soil are excavated, and then they are spread on a kind of a pad, right? और उस पैड के अंदर एक बिल्डिंग सिस्टम होता है, जहाँ जिसके अंदर ऑब्वियसली जो सॉइल जिसकी आप डिकंटामिनेशन करना चाह रहे हैं, तो एक इसका अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट इज लाइक अ पैड, एंड दैट पैड हैज अ बिल्ट इन सिस्टम। उसके अंदर एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम से क्या होता है कि जो भी फॉर एग्जांपल जो भी कंटामिनेंट्स हैं, दे that feeds into that inbuilt system, right? तो इसमें बस यही है कि जो सॉइल है जिसकी आप डिकंटामिनेशन करवाना चाह रहे हैं, यू जस्ट स्प्रेड दैट सॉइल ऑन द पैड, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी कंटामिनेट्स प्रेजेंट हैं दैट गेट सीप इनटू द दैट जो बिल्ड इन सिस्टम है, और कंटामिनेट्स इसके अंदर जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सॉइल को थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो टर्न किया जाता है, सो दैट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कुछ सॉइल दैट के बिल्कुल इन दैट वाज इन कांटेक्ट, क्लोज कांटेक्ट विद द पैड, और कुछ सॉइल ऐसी थी कि जो सॉइल ऊपर सॉइल के ऊपर सॉरी पैड के ऊपर वाले हिस्से पे थी, तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल मिक्स दैट सॉइल सो दैट जितने भी कंटामिनेट सॉइल के ऊपर प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है, वो सारे के सारे जो है वो उसके अंदर दे गेट सीप इनटू दैट बिल्ट-इन सिस्टम, राइट? So obviously moisture and nutrients will be provided in that case as well as um, इस मतलब ये जो प्रोसेस है इट लैंड फॉर्मिंग इट डिपेंड्स के for how much time we are providing the nutrients to the microbe, for how much time we are providing the oxygen or temperature to the microbe, ठीक है। अगर हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं माइक्रोब तो दे बेसिकली complete that process um, very fast, right? अब कुछ ऐसे बाजू का सॉइल के अंदर कंटामिनेट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं कि वोलेटाइल, दे कंटेन्स वोलेटाइल कंटामिनेंट्स, राइट? तो बेसिकली ऐसे कंटामिनेंट्स के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसी सॉइल के लिए अगर हम लैंड फॉर्मिंग का प्रोसेस यूज कर रहे हैं कि दैट सॉइल कंटेन्स वोलेटाइल कंपाउंड्स, तो what we will do we will perform that process in some kind of closed container, ठीक है।
या क्लोज चैम्बर, सो दैट जो volatile compounds and they don't get uh, evaporated, don't get converted into the vapor form. ठीक है। लैंड फार्मिंग में इन सिंपल वर्ड्स, लैंड फार्मिंग में अगर हम ऐसी सॉइल की डिकंटामिनेट करवा रहे हैं दैट कंटेन्स सम वोलेटाइल कंपाउंड्स, तो हमें लैंड फार्मिंग that we have to do that process in some kind of enclosed container so that those volatile compounds don't get evaporated. ठीक है। minimize the volatilization of those compounds who basically perform that process in enclosed container. ठीक है। सेकेंड इसका आता है दैट इज सॉइल बायोपाइल्स। सो इन दिस केस जो भी कंटामिनेटेड सॉइल है दैट इज बेसिकली पाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ हीप्स एंड दैट हीप्स आर सेवरल मीटर हाई। और जिससे आप कोई चीज पाइल अप कर देते हो उसी तरह से कंटामिनेटेड सॉइल को भी आप पाइल अप कर दोगे और इन द फॉर्म ऑफ हीप्स। और वो हीप्स काफी ज्यादा मतलब हाइट की होंगी और ऑब्वियसली फिर दैट इज बेसिकली दैट प्रोसेस परफॉर्म इन सम काइंड ऑफ container, ठीक है, soil bypass. And फिर obviously there's an air distribution system at the base of that container, and with the help of that air distribution system, basically microbes are provided with the oxygen from the air, right? So there's a kind of vacuum pump एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कह रहे हैं कि हम उसके बेस पे वैक्यूम पंप लगा होता है और obviously that vacuum pump will basically pulling the air and providing the oxygen to the microbes that are present in that contaminated soil. और अगर हम खुद ऐड करें माइक्रोब्स तब भी, और अगर ऑलरेडी उस कंटामिनेटेड सॉइल के अंदर present है और obviously those microbes will perform the process of बायोरेमिडिएशन। तो लाइकवाइज मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स भी फिर माइक्रोब्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। और अगेन अगर इन द केस आपके सॉइल के अंदर वोलेटाइल कंटामिनेंट्स हैं इन केस ऑफ सॉइल biopiles, so obviously again this process is obviously going in to be performed in the some kind of enclosed chambers. Okay. So in this case obviously they just like आप जो भी contaminated soil है you just pile that soil in the form of heaps that are submitted high, or at the base of that system there is like vacuum pumps, and that the vacuum pumps are basically involved in aeration. Aeration obviously means to provide air to the microbe, and that microbes are also provided with some nutrients and oxygen, so that they decontaminate the contaminants that are present in the that soil. Um, like मैंने कहा जैसे के case maybe if there are some volatile contaminants, obviously the process is going to be done in some kind of input. Next, and the last type of solid phase bioremediation, that is the compositing. So obviously in this case जो biodegradable waste होते हैं that are going to be mixed with some kind of a bulking agents, जैसे हम इसमें भी देंगे या corn cobs डाल देंगे, and obviously we will provide the optimum levels of air and moisture and obviously nutrients, pH temperature वगैरह maintain, and obviously these bioremediation these microbes which are present in the soil they will do the process of bioremediation. ठीक है। जैसे पहले बात की है कि in some cases microbes don't
use the contaminants as a substrate. There is a need of some kind of extra substrate, or that extra substrate are going to uh, um, that will basically help the microbe to basically complete the process of bioremediation. ठीक है, जैसे मैंने कहा है कि obviously microbes के enzymes are basically involved in the process of bioremediation. तो जैसे पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था कि लाइक कुछ केसेस में ऐसे होता है कि जो कंटामिनेंट्स हैं वो ऑब्वियसली माइक्रोब्स के एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके एज अ सबस्ट्रेट लगेंगे एंड फिर ऑब्वियसली दोज कंटामिनेंट्स आर गेट कन्वर्टेड इनटू non-hazardous, non-toxic compounds, and microbe will convert them into like carbon dioxide and water, and that is not dangerous to the environment. लेकिन कुछ cases में like ऐसे इसको हम बेसिकली क्रिएटिशियस मेटाबॉलिज्म का भी नाम देते हैं लेकिन दूसरे केस में माइक्रोब्स कंटामिनेंट माइक्रोब के जो एंजाइम्स हैं वो कंटामिनेंट्स को एज अ सबस्ट्रेट यूज नहीं करते हैं बट देयर इज अ नीड कि हम उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट डालें सो दैट माइक्रोब के एंजाइम के ऊपर जाके वो जो एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट था वो लगेगा कंटामिनेंट नहीं लगेगा और फिर उस माइक्रोब उस कंटामिनेंट्स को दे गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो ऑब्वियसली कंपोजिटिंग के केस में भी उसमें आप जो भी कंटामिनेटेड सॉइल है उसमें माइक्रो प्रेजेंट है तो हम बेसिकली उस सॉइल को मिक्स कर देंगे कोई स्ट्रॉ वगैरह डाल देंगे या कॉर्न कॉब्स वगैरह डाल देंगे so that microbes will use these straw or corn cobs as a substrate ठीक है and they will do the process of bioremediation and convert the contaminants into the carbon dioxide and water. I, अब composite की बात की जाए तो there are three main designs of compositing like static pile like second one is mechanically agitated invisible compositing and third is windrow compositing ठीक है static pile compositing में obviously this composite is formed into the piles obviously उसी तरह से जैसे आपने soil biopiles में उसको pile up कर दिया था इसमें भी इनकी files बनाई जाती हैं and then obviously they are those files will be aerated with blowers or vacuum pumps और blowers or vacuum pumps का क्या काम है to provide air or oxygen to the microbes so that they can carry out the process of bioremediation. So in static pile compositing, composite is formed and aerated with some kind of blowers or vacuum pumps. Okay. Second one है mechanically agitated in vessel compositing. In vessel, obviously, this process is going to be done in some kind of vessel. So composite is placed in a treatment vessel, and then obviously it is then there it is mixed and then irradiated so that bioremediation can be performed by the microbe present. Last one is the windrow compositing. Like windrow is a term that is used like हम उस composite की अगर बहुत बड़ी बड़ी files बना देते हैं तो हम उसको नाम देते हैं windrow का ठीक है तो in that case composite is placed in some long files जिनको हम नाम देते हैं windrow का and then those files are periodically mixed by some equipment like tractor like equipment those pipes will be periodically mixed so that those contaminants are evenly distributed or those contaminants are easily available to the microbes so that they can use the process of bioremediation right uh, this was all about ex situ bioremediation like इसके हमने दो मेन टाइप्स और इसके ऑब्वियसली फर्दर टाइप्स इस टॉपिक में जो है वो डिस्कस की है